वही देखी देखी एक आ गया मैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे स्टूडेंट्स, माय गॉड, 9 स्टूडेंट्स, पूरे 7 8 स्टूडेंट्स, 9 तो मैं खुद हूँ। क्या बात है। सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वॉव। मैं अपनी बारिश छोड़ के यहाँ क्लास लेने के लिए बैठा हूँ। इन लोगों को तो नौकरी खत्म नहीं हो रहे। 9 लोग हैं। चलें खैर, 9 को अच्छा बढ़ा देते हैं कुछ मजे का, ताकि बाकी लोगों को फिर हम इग्नोर फील कराएं। अच्छा, सीन है कि हमने एक होमवर्क दिया था, ना चाहते हुए भी एक होमवर्क दिया था हमने। हमें देना नहीं था लेकिन हमने दे दिया था। तो वो होमवर्क हो गया होगा, आई होप, यू नो। तो उसका जो होमवर्क था, उसकी जो अपडेट है वो ये है कि हम आपके साथ उसके आंसर्स शेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया। तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चंस भेज दिए थे आपको, अब मैं उसके आंसर्स आपको भेज देता हूँ। तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि if there is anything that needs more explanation, more clarity, तो वो मुझे बता दें। अगर नहीं है ऐसा तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। So that's the answers that have been shared on your WhatsApp group. ठीक है भाई। Madam, we have done naming organic substances, IUPAC naming हमने किया। या काइंड ऑफ सिमिलर टू 11 naming। तो अच्छा, दी जो लोग अभी आए हैं जस्ट नाउ ज्वाइन, भाई वी डिड दिस इन द लास्ट सेशन राइट, एंड दैट वाज सपोजिटली हमने क्वेश्चंस आपको दिए थे एंड आपको करना था, एंड दैट्स द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। So you can go through these answers, and if you find anything difficult, just let me know. I'll explain that to you. ठीक है।
मैं जिन्होंने कर लिए वो अपने स्कोर्स बता दें मुझे, क्या रहा कैसा रहा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. So these were the questions which I sent. These are the answers to the questions. Okay. I'm waiting. So have you guys checked it? Are there any questions from this worksheet that you want me to help you up with? Or we can start with something else. Done. So no questions, no responses. अब इसका मतलब है इसके बाद कभी ये दोबारा टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है भाई? आप लोगों को क्लैरिटी होगी इसमें, कभी कोई बात नहीं हो रही. क्या ख्याल है आपका? Okay, we are going to move towards something else. Excuse me, sir. Yes, that's good to hear. Someone is alive. सर हम डाई ऑक्टीन लिख सकते हैं ऑक्टा डाई इन की जगह. नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते. ओके. स्टैंडर्ड आईयूपीएसी नेमिंग में ऑक्टा डाई इन आता है या डाई इन आता है, लेकिन डाई ऑक्टेन नहीं लिख सकते हैं. हाँ, वो कॉमन नेमिंग में लिख सकते हैं या सिंपल नेमिंग में. Anything else from anyone?
Nahin? Done? Then we can start up with organic basics. जो अब प्लान रहेगा या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि हमारा डिस्कशन रेलिवेंट टू हर फंक्शनल ग्रुप होगा और हर फंक्शनल ग्रुप में हम पहले उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है, दैट वुड बी दी प्रिपरेशन टेक्निक एंड ऑल. और दूसरा ये कि कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है. आप जो क्लास में कर रहे होंगे दैट वुड बी मोर देन इनफ. येट अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो आपका जो दिल चाहता है आप बुक यूज करें. कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स चाहिए होता है वैसे तो, लेकिन अगर आप क्लास में स्लाइड्स भी कर लेंगे सो आपकी तैयारी हो जाएगी. ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद ऑर्गेनिक बेसिक्स. तो ऑर्गेनिक बेसिक्स में सबसे पहली चीज, अच्छा, टुडे इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 5, राइट? So first thing is vital force theory. And vital force theory suggests, what was this theory about? So organic compounds cannot be synthesized. So cannot be synthesized in labs artificially, as they need some mysterious force or X force or vital force for their preparation. ठीक है भाई, दैट वाज दी अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब के अलावा बना ही नहीं सकते, लैब में भी नहीं बना सकते. जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम वही यूज कर सकते हैं. तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त बेसिकली यूज करते थे ये लोग एनिमल्स को, तो वही थे, वहीं से एक्सट्रैक्ट करते थे. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. दे इनिशियली बिलीव दैट HCl इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन्होंने ऐसा कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी वाले लोगों ने, कि और ये HCl को निकालने के लिए एनिमल्स को मारते थे, फिर उनके स्टमक से निकालते थे, इस तरह से हरकतें करते थे. सो दैट वाज व्हेन द नेम केम इनटू एग्जिस्टेंस. ऑर्गेनिक is derived from organa, that was a living organism. और artificially बनाने का कोई तरीका नहीं था. That continued to happen till an experiment. Can I change my slide? So Wohler, that is Friedrich Wohler, in 1828, and yes, I want you to know the name and the date as well, prepared urea from ammonium cyanide. He was the first person to ever create organic substance, organic compound. So इन्होंने हीट किया था इसे, और this ammonium cyanide converted to urea. That was an inorganic compound, and that is an organic compound. ये इन्होंने किया था सबसे पहले. So this led to discarding of that vital force theory, क्योंकि इन्होंने artificially बना लिया था. Then they derived, then they, kind of re-explained the organic chemistry or organic compounds, where they labeled organic compounds are hydrocarbons and their derivatives. So you can say that's the modern concept, derivatives. यहाँ लिख देता हूँ.
So first we are going to start up with, that's the modern concept. First we are going to start up with alkanes. And जो सेकंड पिछली स्लाइड दिखाएंगे. बिल्कुल दिखाएंगे. हो गया, थैंक यू. अच्छा, तो यहाँ तक सबको बात समझ में आती है. हमने अभी तक सिर्फ दो बातें की हैं कि ओरिजिनली देयर वाज दिस थॉट कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते, तो हम बनाते भी नहीं थे. तो नहीं बना सकते थे इसलिए कहते थे. और वोलर भाई ने पहला एक्सपेरिमेंट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का हमें मेथड दिया कि नहीं बना सकते हैं, ऐसी कोई जादुई शक्तियां वक्तियां नहीं चाहिए, कोई फेरी टेल नहीं है कहानी. सिंपल कंपाउंड्स का एनालिसिस है वो करो और बनाओ. और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्पीड में बनना चाहिए. ठीक है, अल्केन्स का जनरल इंट्रोडक्शन. सबसे पहली चीज ही हम कहते हैं दे आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स. And why are they known as paraffins? Because term para means less and fins is from affinity. So they show less affinity for reactions. That is why they are known as paraffins. General molecular formula CnH2n plus 2, and all carbon to carbon bonds must be single bonds. Then we can say, since they are all single bonds, so the shape of alkene should be based on carbon's shape, and that is tetrahedral. And the bond angle between carbons in tetrahedral molecules are 109.5 degrees. More properties can lead to classified as saturated hydrocarbons, as all carbon bonds are filled. Saturated hydrocarbons, resistant to addition reactions, hardly addition reactions शो करते हैं, but कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते. ठीक है, and also not decolorize bromine water and KMnO4. So they don't decolorize them as well. ये general properties हो गई या introduction हो गया alkanes का. Now switching towards the preparation. Can I change my slide? सो प्रिपरेशन के ऊपर आते हैं. तो जहाँ से अब चीज़ें सबके लिए नहीं होंगी, और जो कैमरेज लर्नर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी, जो नए नॉन कैमरेज हैं उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी. तो बहुत ध्यान से समझना है. प्रिपरेशन इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा बच्चों का जो है ग्रुप होता है या बच्चे होते हैं इस मेंटालिटी के, सर वो परेशान हो रहे होते हैं कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन कैसे आएगा. तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो ऑब्वियस है. जब हम टेस्ट प्लान देखेंगे और हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. लेकिन अगर आप मेथड यही याद रखेंगे जो हमने किया होगा तो आप क्वेश्चन में कभी. तो दूसरी, स्ट्रक्चर्स याद हो ना याद हो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन टाइटल और नेम्स और वर्ड्स ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से हर बच्चा
चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का है, ठीक है, वो बड़े आराम से ये रिएक्शन कर सकता है। क्या ख्याल है आपका? राइट, सबको पता है ये क्या होगा, लेकिन वो कभी भी इस तरह से इक्वेशन देके नहीं पूछते क्वेश्चन, ठीक है, वो उसका एक टाइटल पूछेंगे या वो लिखेंगे। सेकेंड थिंग, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी परेशान नहीं होना। जो हमारे सीआई वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा जज्बाती होते हैं कि सर ये तो गलत है। भाई ये गलत नहीं है, या आपने गलत पढ़ा होगा, मानते हैं आपने ऐसे नहीं पढ़ा, लेकिन ये किताबों में लिखा हुआ होता है और एक्सेप्टेड होता है। तो एक ही बात है, पहले तो ये कि नो ऑफेंस ऑन दिस प्रोपोजिशन ऑफ के हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड कैसे होगा। इतना कोई भी जो है वो बेवकूफ नहीं है कि हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड अज्यूम करेगा, अंडरस्टूड है कि ये कार्बन है। तो ये पहली क्लैरिटी हो गई। दूसरी क्लैरिटी, इसका क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन आएगा भाई, व्हाट इज प्रिपेयर्ड बाय सेबेटियर सैंडर्स रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स। सो हमने रिएक्शन करना है सेबेटियर सैंडर्स रिएक्शन, ठीक है, ये एक रिएक्शन का नाम है जो पहले याद होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो लेबल दिस एज रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। And then we are going to plan a general equation. General equation can give us different subsets, such as अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, generally alkenes. So generally alkenes are represented through this alongside hydrogen, and then they form this. So that's any alkene, and that's an alkane. ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो आपने पहले लिखी है, that can be counted as an example of this reaction, right? So that's how you have to learn it. तो ये याद होना, meaning if I highlight this, ये याद होना कोई इंपॉर्टेंट बात ही नहीं है, वो ये कभी क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन इसके बारे में होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। इज दिस अंडरस्टूड? So first reaction is done, where you can have another example. So we can add hydrogen to it. अच्छा, general conditions हमने add नहीं की, हम यहाँ लिखते हैं that has to be nickel or platinum and temperature is 200 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. Okay. So we can use nickel or platinum. Temperature is 200 degrees Celsius to 300 degrees Celsius, and it is going to give us a simple alkene. So that's a propene, and that's a propane. So limitation of this method is that above reaction is not valid to prepare methane. हम मीथेन नहीं बना सकते इससे, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है मीथेन टाइप की। अगर मीथेन टाइप की कोई चीज होती तो हम मीथेन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते तो वो मीथेन बन जाता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। तो ईथेन बना सकते हैं। ठीक है भाई, that is one thing. Second thing is, second reaction is decarboxylation of sodium alkanoate or sodium acetate. So this is a two-step reaction. Step one, where we are going to have a carboxylic. थोड़ा सा ऑपरेशन कर लें. This is carboxylic main functional group. That's alkyl. That can be methyl,
ethyl, etc. Okay, that's carboxylic. We can add sodium hydroxide to it, which is known as caustic soda. And then what happens? As we have done in, आपने किया हुआ होगा सबने, OH ग्रुप जब भी सोडियम देखता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है और क्या करता है, रिमूव दिस हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे अल्कोहल में होगा. So it adds on to this side. So this becomes sodium acetate, जिसका UPSC नेम है सोडियम alkanoate. ठीक है. Alongside we are going to have water. That's the step one. Okay, so that's step one. Step two is that this carboxylic group would be removed. So the acetate part is going to react with sodium hydroxide in a slightly alkaline substance, that is calcium oxide, जिसे हम कहेंगे quicklime. And what happens? Basically, this bond gets broken up and this R is replaced here. So जो structure बनेगा वो बनेगा NaO with ONA alongside NRH. तो ये क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट और ये क्या है? Alkane. And obviously it can be methane as well. Is this understood? So let's understand it through an example that will be more convenient. So let's start up with carboxylic. ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम. That is basically ethanoic acid alongside sodium hydroxide. And what happens? First was the attack here, CH3COONA. ठीक है, alongside H2O. Second step is they're going to again react in the presence of calcium oxide and heat. ठीक है, क्या होगा? So I told you this will replace this. So what we have is CH3, that is an alkyl R group. ठीक है भाई? Or that has taken all hydrogens, and alongside what we have here is NaO and ONA, जिसे हमने लिखा था Na2CO3. So what do we have here? That's an alkane, methane.
Okay. Is this understood now? Fariha, no, Fariha, I don't know what is your name. Is this understood, beta? Whoever was asking this question. So now I would ask you guys to prepare. देखो अब इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें बड़े आराम से मीथेन नहीं बना लिया. The question so question once came was like alkanes can be prepared through. Okay. So I think option C was decarboxylation of sodium acetate. ठीक है, तो ये याद होना चाहिए. So अब आप जरा मुझे बना के दिखाएं ईथेन, और ये जो आंसर्स है ना, ये भेजें जरा मुझे मैसेज पे व्हाट्सएप पे जल्दी से. Done? Yeah, I have started to receive answers. That is
step 1, and that's the step 2, and that's incorrect. जिसने ये भेजा मुझे. So CH3, CH2, COOH with sodium hydroxide, I'm going to form CH3, CH2, COONA alongside water, and the CH3, CH2, COONA is going to react with sodium hydroxide and quicklime and going to give us CH3 and CH2-H, which is CH3 with sodium carbonate. So that's how you got this ethane made. ठीक है. दूसरी चीज, mixture of sodium hydroxide and calcium oxide is known as quick soda lime. So ये भी लिख सकते हैं हम कि decarboxylation happens in soda lime because that's caustic soda and that's quick lime. So इनका mixture soda lime. ठीक है, ये भी याद रखनी है बात. Is this understood to everyone? Then third preparation is by reduction of alkyl halides. So we can have an alkyl halide, we can reduce it through different techniques. First हम use कर रहे हैं nascent hydrogen, that's atomic hydrogen, which is highly reactive. जिसे हम nascent hydrogen भी कहते हैं. This is not molecular hydrogen. And how is it prepared? This is prepared by reaction of metal and an acid. दूसरी चीज हम use कर सकते हैं sodium and ethanol. So it's either this or this. So what you're going to have is an alkane and hydrogen halide. So that's haloalkane. IUPAC name लिखें इसका. That's alkane. That's hydrogen halide. We can also have a relevant example here. जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं alongside HCl. That's ethane. ठीक है भाई.
हाँ, आपने रिएक्शन टाइटल की बात की थी, दैट वाज द रिएक्शन टाइटल स्लाइड। चैट में एक बच्चा है, वो ये कह रहा था, मिर्जा, यू वांट मी टू शो यू दिस स्लाइड, और कोई और बात कर रहे थे आप? डन। तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आती हैं? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? No doubts, no questions, nothing in your mind? तो जस्ट टू शो यू गाइस कि इस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे पहले डिफरेंट टेक्निक से, उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शंस करेंगे, और फिर हम सिलेबस कंपैरिजन भी कर रहे होंगे साथ साथ कि AKU में कैसे क्वेश्चन आएगा ये वाला, और MD कार्ड में कैसे आएगा। ठीक है, तो ये कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। आई थिंक बाकी बात है नेक्स्ट क्लास।